गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन इंडिया। तो GS2 के पॉलिटी सेक्शन के लिए आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि फॉर्मर झारखंड गवर्नर जो थे द्रौपदी मुर्मू जी, वो इंडिया के 15th प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। तो हम कुछ देखते हैं पहले तो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमारे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से कौन कौन से जो है वो एसोसिएटेड हैं। तो जैसे आर्टिकल 52 कहता है कि एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। आर्टिकल 54 कहता है कि क्या प्रोसीजर होगा, क्या इलेक्टोरल कॉलेज होगा। ऐसे ये 4-5 आर्टिकल यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, तो इसको आप पढ़ लेना। तो उसके लिए ही इस इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए हमारी पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952 में भी पास किया था, जिसमें ये कहा गया है कि जब आपके जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट का टेन्योर खत्म होने वाला है उससे 60 दिन पहले या फिर उस 60 दिन के पीरियड के बीच में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो नोटिफिकेशन निकाल के प्रेसिडेंट इलेक्शंस करवा सकते हैं। आर्टिकल 55 सबसेक्शन 3 के अंदर जो है वो या फिर आर्टिकल 55 क्लॉज 3 के अंदर जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो है बताया गया है कि वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होंगे और सीक्रेट बैलेट से होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताया गया है कि 35 ईयर ओल्ड होने चाहिए, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करने होने चाहिए, मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए बनने के भी वो क्वालिफाई होने चाहिए, और कंट्री में कहीं ना कहीं वो एक इलेक्टर भी रजिस्टर्ड होने चाहिए। नॉमिनेशन भी ऑफ कोर्स उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया मैंशनड है कि 50 इलेक्टर्स उनके प्रपोजर्स होंगे और 50 इलेक्टर्स उनके सेकेंडर्स होंगे, और 15,000 रुपये डिपॉजिट कराने होंगे एज सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर द इलेक्शन। जो अब रिटर्निंग ऑफिसर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन होते हैं, या तो सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के या फिर सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा के। ये आपके रोटेशन बेसिस पर चलता है। जैसे इस साल 2022 के जो प्रेसिडेंशियल पोल हुए उसमें जो राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर की तरह उन्होंने काम किया है। तो इलेक्टोरल कॉलेज कौन कौन सा होता है, कौन लोग वोट करते हैं? जितने भी इलेक्टेड MPs हैं दोनों हाउसेस के, और जितने भी इलेक्टेड MLAs हैं दोनों, जितने भी स्टेट्स और दिल्ली और पुडुचेरी के, वो सब इसमें वोट करते हैं। याद रखो, नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें वोट नहीं करते हैं। अब वैल्यू ऑफ वोट्स कैसे डिराइव होती है, तो ये डिफर करता है स्टेट टू स्टेट, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कोर्स। एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया गया है जिससे हर स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से उनके जो MLAs होते हैं उनकी वोट की वैल्यू जो है वो मार्क की जाती है। और जो आपके MPs होते हैं उनकी वोट कैसे डिराइव की जाती है, तो टोटल वैल्यू जितनी भी आपके स्टेट्स और यूटीज़ के वोटर्स की जितनी भी वैल्यू है उसको टोटल नंबर ऑफ MPs से डिवाइड कर देते हैं, तो जो वैल्यू आती है वो वोट पर MP हो जाती है। किसी भी कैंडिडेट को जीतने के टाइम पर 50% + 1 वोट चाहिए होते हैं। ठीक है, ये आपका जो बेसिक रूल है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हेट स्पीच। तो ये भी आपका GS2 का गवर्नेंस सेक्शन से खासकर रिलेटेड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि आप 6 हफ्ते के अंदर हमें बताओ कि स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक क्या क्या एक्शन लिया है हेट स्पीच को रोकने के लिए या फिर हेट क्राइम्स को रोकने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कुछ गाइडलाइंस इशू की थी जिससे कि हेट क्राइम्स को रोका जा सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को जो है वो गाइडलाइंस इशू की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने होम मिनिस्ट्री से जवाब मांगा है कि आप रिपोर्ट दो कि कौन कौन सी स्टेट ने जो है इसके ऊपर एक्शन लिया है। तो पहले तो हम देखते हैं हेट स्पीच होता क्या है। तो आप कोई भी इस तरह की स्पीच जिससे आप एडवोकेट कर रहे हो, कुछ इंसाइट कर रहे हो, उकसा रहे हो, प्रमोट कर रहे हो या जस्टिफाई कर रहे हो वायलेंस को, हेट को या फिर डिस्क्रिमिनेशन को अगेंस्ट एक पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन्स, तो उसको आप हेट स्पीच कह सकते हो। हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा डेंजर है ये। हमारे ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ को भी प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत बड़ा डेंजर है ये। तो ये एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इंटॉलरेंस है जो कि हेट क्राइम में कन्वर्ट हो सकता है, हेट स्पीच। हमारी आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन तो दिया गया है, लेकिन क्लॉज 2 में बताया गया है कि इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। अगर आपको सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी को खतरा हो, इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा हो, फ्रेंड रिलेशंस, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी को कुछ खतरा हो, तो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। तो हमारे IPC में भी हैं, जैसे सेक्शन 153A जो है आपका IPC वो कहता है कि अगर आपकी कोई स्पीच जो है वो एनमिटी प्रमोट कर रही है तो उसको उसके अंदर आपको ऑफेंस माना जाएगा उस स्पीच में, और 3 साल की जेल हो सकती है। सेक्शन 505 भी जो IPC का वो कहता है कि पब्लिक मिसचीफ के लिए अगर कोई स्पीच दी जा रही है तो वो भी पनिशेबल है। फिर इवन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में सेक्शन 8 जो है वो डिस्क्वालीफाई करता है कोई ऐसे कंटेस्टेंट को जो कन्विक्ट हुआ है जो है इलेजिटिमेट यूज़ करने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का। हमारा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 भी जो है उसका सेक्शन 7 कहता है कि अगर कोई
ऐसी स्पीच दे रहा है जिसमें अनटचेबिलिटी को वो जो है एनकरेज कर रहा है, तो उसको जो है वो पनिशेबल होगा वो ऑफेंस, ठीक है। फिर आपका रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एक्ट भी कहता है कि सेक्शन 3 सब सेक्शन जी जो है उसके अंदर कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो ऐसे ही अपने प्रीमिसेस को नहीं यूज़ करने दे सकता जिससे कि एनमिटी की कोई एनमिटी डिसहार्मनी बढ़ाने वाली कोई स्पीच दी जा रही हो। तो अब कुछ जजमेंट्स भी आई हैं, जैसे प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट, जिसमें कहा था कि एग्जिस्टिंग लॉ जो है हमारे आईपीसी या बाकी हमारे लॉ में, जो आपके जितने भी लॉ में आपके सेक्शंस दिए जो हमने भी ऊपर पढ़े हैं, वो इनफ हैं हेट स्पीच को डील करने के लिए। इवन जफर इमाम नकवी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के केस में भी जो है पटिशनर्स जब उन्होंने पीआईएल डाला तो यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने जो है प्रोविजंस दिए हुए हैं। इवन इलेक्शन कमीशन के पास भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर जो है वो पावर्स हैं सेक्शन 8 के अंदर, तो वो उससे डील कर सकते हैं, इसके लिए सेपरेट पीआईएल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो लॉ कमीशन ने प्रपोजल दिया। अब कुछ सजेशंस देखते हैं कि कमेटीज़ ने क्या क्या सजेशन दिए हैं। तो लॉ कमीशन ने सजेशन दिया कि आप इसको आईपीसी के अंदर कुछ सेपरेट ऑफेंसेस बना दो हेट स्पीच को क्रिमिनलाइज करने के लिए। फिर एमपी बेस बरुआ कमेटी और टीके विश्वनाथन कमेटी ने भी बोला कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जैसे एक्ट्स को भी जो है हेट स्पीच की कैटेगरी में डाल के आईपीसी के अंदर डाल दिया जाए। फिर कमेटी फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉ ने भी बोला कि स्पेसिफिक प्रोविजंस जो है वो हमारे आईपीसी में डाले जाने चाहिए ताकि हम जो है पनिशेबल बना सके हेट स्पीच को। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो 2018 में गाइडलाइंस इशू की थी जिसके ऊपर अब रिपोर्ट मांगी गई है वो भी देख लेते हैं। तो तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की थी कि जिससे हम हेट स्पीच को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला था कि एक तो फास्ट ट्रैक ट्रायल होना चाहिए ऐसे केसेस का, विक्टिम को कंपनसेशन मिलनी चाहिए, पनिशमेंट जो है वो बड़ी डेटरेंट होनी चाहिए, डिसिप्लिनरी एक्शन उनके खिलाफ भी लो जो लॉ एनफोर्सिंग ऑफिसर्स हैं लेकिन उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया। फिर नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाने चाहिए ताकि जो है वो हेट क्राइम को जो है वो नोट कर सके और एफआईआर जो है वो अक्रॉस द कंट्री रजिस्टर करवा सके, ठीक है। तो ये कुछ गाइडलाइंस देखते हैं, इसके ऊपर आने वाले टाइम में यूनियन होम मिनिस्ट्री बताएगी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो डेटा सबमिट करके कि किस स्टेट ने कितना इसके ऊपर एक्ट किया इन गाइडलाइंस के ऊपर। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अबॉर्शन राइट्स ऑफ अनवेड वुमेन। तो अब ये सोशल इश्यूज़ का आपका टॉपिक है GS1 का। अब इसके अंदर क्या हुआ है कि एक अनमैरिड वुमेन जो है उसने दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया था, जिसमें वो 25 ईयर ओल्ड वुमेन थी और उन्होंने बोला था कि उनकी 23 वीक्स 5 डेज़ की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की उनकी इजाज़त दी जाए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया और कहा कि जो आपका जो है आपके जो ये विमेन ने जो है वो रूल 3B जो है वो आपका MTP एक्ट का या MTP रूल्स का उसको भी चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि एक्चुअली क्या हमारा जो MTP एक्ट है उसके अंदर अनमैरिड विमेन के लिए स्पेसिफिकली प्रोविजंस हमने नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो अब जो है इसीलिए जो है वो अनमैरिड वुमेन जो है उन्होंने चैलेंज किया इस लॉ को कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने बाकी सब के लिए प्रोविजन बनाए हैं बट अनमैरिड वुमेन के लिए आपने प्रोविजन क्यों नहीं बनाए हैं। तो इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है अब ये बोला है कि ऑफकोर्स अगर आप अनमैरिड वुमेन को ये राइट डिनाई कर रहे हो तो आप उनके पर्सनल ऑटोनॉमी और फ्रीडम को जो है वो वायलेट कर रहे हो अंडर आर्टिकल 21। इवन उन्होंने ये भी बोला है कि रूल 3B को भी अगर हम इंटरप्रेट करें MTP रूल्स के तो अनमैरिड वुमेन के लिए भी उसके अंदर प्रोविजन है। कैसे पता लगता है ये कि MTP एक्ट 2021 में हस्बैंड वर्ड जो आपका MTP एक्ट 1971 था उसमें हस्बैंड वर्ड यूज़ किया गया था, लेकिन MTP एक्ट 2021 में पार्टनर वर्ड यूज़ किया गया अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 ऑफ दिस एक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑफ कोर्स जो हमारी गवर्नमेंट है उस लॉ को जब लेके आ रही थी तो उनका इंटेंट ये था, इस लेजिस्लेशन का इंटेंट ये था कि जो है सिर्फ जो है मैरिड वुमेन ही नहीं अनमैरिड सिंगल विमेन इन सब को इस कैटेगरी के अंदर डाला जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको ब्रॉडन कर दिया इस व्यू को। तो हम जब देख ही रहे हैं तो टॉपिक तो इसको में हम अबॉर्शन लॉज ऑफ इंडिया भी देखते हैं। तो जैसे इंडियन पीनल कोड है 1860 उसमें बहुत ही पीनल प्रोविजंस थे, अगर कोई वॉलंटरली जो है वो अबॉर्शन कराता था तो उसके लिए जो है पीनल प्रोविजंस थे। लेकिन MTP एक्ट 1971 में हमारी गवर्नमेंट लेके आई जिसमें लिबरलाइज कर दिया गया एक्सेस टू अबॉर्शन को। अगर 12 वीक्स तक की प्रेगनेंसी है तो उसमें एक डॉक्टर की सलाह पर उसको टर्मिनेट किया जा सकता था।
ये 1971 का एक्ट ऑफ कोर्स। और 12 वीक्स से 20 वीक्स तक की अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें दो डॉक्टर्स के एडवाइस पे उसको टर्मिनेट किया जा सकता था। अब ये टर्मिनेशन कब अलाउड है? अगर जो है विमेन की, जो प्रेग्नेंट विमेन है उसकी लाइफ को अगर कोई डेंजर है, या फिर जो चाइल्ड है उसकी लाइफ को अगर कोई डेंजर है, तो जो है ये डॉक्टर्स अलाउ कर सकते हैं इसको टर्मिनेट करने के लिए। अब जो MTP एक्ट 2021 जो लास्ट ईयर आया है, उसके अंदर टाइम पीरियड को बढ़ा दिया गया है। अब 20 वीक्स तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए एक डॉक्टर के ओपिनियन की जरूरत है। 20 से 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए 2 डॉक्टर्स के ओपिनियन की जरूरत है। और इसमें 20 से 24 वीक्स के तक की जो आपके टर्मिनेशन के लिए कुछ रूल्स स्पेसिफाई किए गए हैं। रूल्स 3B जिसको ऊपर चैलेंज भी किया गया था, अभी हमने देखा था, तो उसमें बताया गया कि कौन कौन से 7 कैटेगरीज ऑफ विमेन जो हैं उनको ही अलाउड है टर्मिनेशन करवाना। तो वो 7 कैटेगरीज यहाँ पर मेंशन की गई हैं: सर्वाइवल ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और रेप और इंसेस्ट, माइनर्स, चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस, अगर ऑनगोइंग प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर मैरिटल स्टेटस चेंज हो जाता है, विडोहुड हो जाते हैं, डाइवोर्स हो जाता है, तो भी जो है टर्मिनेट करने का जो है वो प्रोविजन है। विमेन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़ को भी अलाउड है, मेंटली इल विमेन को भी अलाउड है, ठीक है। फीटल माल फॉर्मेशन हो जाती है तो भी अलाउड है, या फिर डिज़ास्टर में, ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग, वॉर लाइक सिचुएशन में भी अगर ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर जो है कोई प्रेग्नेंट है तो उसको भी जो है गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है टर्मिनेट करने का, ठीक है। अब इसमें स्पेसिफिकली वर्ड नहीं यूज़ किया गया था अनमैरिड विमेन के लिए, तो इसलिए इसी को जो है सुप्रीम कोर्ट ने अब जो है वाइडन कर दिया डेफिनेशन। उन्होंने बोला कि इंटेंट जो था वो सिर्फ मैरिड विमेन से बढ़ाकर उसको जो है ब्रॉड पर्सपेक्टिव में रखने का था MTP एक्ट का। बस उसमें अनमैरिड वीमेन अगर वर्ड नहीं यूज़ किया तो इसका मतलब ये नहीं कि अनमैरिड वीमेन को एक्सक्लूड किया गया, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक, इंडियन आर्कटिक बिल 2022। तो लोकसभा, अब ये टॉपिक आपके GS3 का जो साइंस एंड टेक का सेक्शन है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो लोकसभा ने जो है इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 को पास कर दिया है। अब इंडिया के पास अपने नेशनल मेजर्स होंगे ताकि वो अंटार्कटिका के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। अब इसके अंदर प्रपोज किया गया है कि इंडियन आर्कटिक अथॉरिटी बनाई जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर, जो कि एपेक्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होगी, ताकि जितनी भी अंटार्कटिक रिसर्च और एक्सपीडिशन के प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको जो है उसके ऊपर फैसला लेने का काम यही कर सके, फैसिलिटेट करवा सके सारे प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ को। इसको चेयर कौन करेंगे? जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के सेक्रेटरी हैं वो इसके चेयरपर्सन होंगे। और इसमें कुछ आपकी मिनिस्ट्रीज़ और जो है डिपार्टमेंट्स के मेंबर्स भी इसमें जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, एज ऑफिशियल मेंबर्स। अब इसके कुछ की प्रोविजंस देखते हैं इस बिल के। तो अब इसमें कहा गया है कि परमिट की रिक्वायरमेंट है, कोई भी अंटार्कटिक में बिना परमिट के जो है वो इंडिया से नहीं जा सकता, उनको परमिट लेना पड़ेगा। कमर्शियल फिशिंग को जो है वो अलाउ किया गया है इंडियंस के लिए अंटार्कटिक में, क्योंकि ऑफकोर्स हमको जो है जो मेंबर कंट्रीज़ हैं अंटार्कटिक ट्रीटी के उनको अलाउड है करना। टूरिज्म एक्टिविटी के लिए भी पहले आपको याद होगा कि अर्जेंटीना के थ्रू जो है वो अंटार्कटिक, अगर किसी को टूरिस्ट को घूमने जाना हो तो अंटार्कटिक अर्जेंटीना के थ्रू जाना पड़ता था, बट अब इंडियन टूर ऑपरेटर्स को भी अलाउ कर दिया जाएगा कि वो अंटार्कटिक में ऑपरेट कर सकें। फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर ड्रिलिंग, ड्रेजिंग, एक्सकेवेशन, कलेक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, इन सबको बैन कर दिया गया है। और लॉ ऑफिसर को भी अपॉइंट करने की बात की गई है कि हमारे जो रिसर्च स्टेशन हैं, इंडियन रिसर्च स्टेशन हैं अंटार्कटिक में, वहाँ पर कोई अनलॉफुल एक्टिविटी ना हो, इसलिए वहाँ पर लॉ ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए जाएंगे। तो इंडिया की जो अंटार्कटिका से इन्वॉल्वमेंट है बहुत पुरानी है। हमने मैत्री नाम से रिसर्च स्टेशन वहाँ पर 1989 में जो है वो एस्टैब्लिश किया था, फिर भारती नाम से 2012 में एस्टैब्लिश किया था। 2008 में हमारा सागर निधि, जो हमारा सबसे पहला इंडियन वेसल बना अंटार्कटिक वाटर्स में नेविगेट करने वाला, वो भी 2008 में हमने वहाँ पर एस्टैब्लिश किया था। तो हम देखते हैं अंटार्कटिक ट्रीटी के बेसिस पर ही ये लॉ जो है लाया गया है। तो इसको 1959 में वाशिंगटन में साइन किया गया था, 1961 में ये इन्फोर्स हुआ। अब टोटल नंबर ऑफ वहाँ पर जो है पार्टीज़ हैं जो इस अंटार्कटिक ट्रीटी की, वो 54 बन चुकी हैं। एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है और इस ट्रीटी में कहा गया है कि 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से नीचे का जो भी एरिया है वो सब कुछ अंटार्कटिक है, ठीक है। अब इसके कुछ की प्रोविजंस देखते हैं। तो इसमें साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन या अगर कोई रिजल्ट्स मिलते हैं हमको अंटार्कटिका से, चाहे वो किसी भी कंट्री के रिसर्चर्स ने किए हों, उन सबको फ्रीली अवेलेबल करवाना होगा ताकि जो है आपस में लोग एक्सचेंज कर सकें उस रिसर्च को। और कुछ कंट्रीज़ हैं जो जिनके वहाँ पर टेरिटोरियल क्लेम्स थे, उनके ऊपर जो है वो उनको कोई रिकग्निशन नहीं मिली है। जो ये अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिले, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, इन सब ने वहाँ पर टेरिटोरियल क्लेम्स किए हुए थे अंटार्कटिका पे, उन सबको किसी ने रिकग्नाइज नहीं किया गया। और
सारे एरियाज जो है अंटार्कटिका के, वहाँ पर कोई भी रिसर्च स्टेशन हो, कोई इंस्टॉलेशन हो, कोई इक्विपमेंट हो, वो हमेशा ओपन रहेंगे इंस्पेक्शन के लिए, बस ये देखने के लिए कि वहाँ पर कोई अनलॉफुल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। अब हम देखते हैं प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिक ट्रीटी। तो 19 अगस्त 1983 को ये मैड्रिड प्रोटोकॉल, जिसका नाम है, वो लेके आया गया है। अब ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए आपके अंटार्कटिका में, उसके लिए ये लाया गया है, ठीक है। तो अंटार्कटिका को एक नेचुरल रिजर्व बोला गया है, ताकि जो कि डिवोटेड टू पीस एंड साइंस है। वहाँ पर माइनिंग को प्रोहिबिट किया गया है। फिर कंटिजेंसी प्लान्स भी बनाने को कहा गया है कि एनवायरनमेंट अगर इमरजेंसी कोई आ जाती है तो उसमें हम कैसे जो है वो वहाँ से बचेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है काली बेन। तो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान जी, उनको अभी रिसेंटली अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा दिल्ली में, बिकॉज उन्होंने अभी एक ग्लास पानी पी लिया था काली बेन से, जो कि एक होली रिवलेट है सुल्तानपुर लोधी में। तो काली बेन एक 165 किलोमीटर की रिवलेट है, जो कि होशियारपुर से स्टार्ट होती है और ब्यास और सतलुज से जाकर मिलती है कपूरथला में, ठीक है। सो इसका पानी जो है वो बहुत गंदा रहता है, क्योंकि इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो आसपास के विलेजर्स या आसपास की इंडस्ट्रीज डालते रहते हैं। अब इसमें पिछले 22 साल से इसको साफ़ करने का जो है वो प्रोजेक्ट चल रहा है, बट ऑफ कोर्स इसको उतना क्लीन नहीं कर पाए हैं एज़ कम्पेयर टू जितना होना चाहिए था। तो अब इसकी सिग्निफिकेंस, रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है? तो इसमें क्या है कि जो फर्स्ट गुरु थे गुरु नानक जी, वो उनको यहाँ पर एनलाइटनमेंट मिला था, ठीक है। जब वो अपनी सिस्टर बेबी नानकी के साथ यहाँ पर स्टे कर रहे थे, तो जनरली वो यहाँ पर बेदिंग के लिए जाते थे, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि वो एक दिन डिसअपेयर हो गए इनके इस पानी में, और तीसरे दिन जब वो बाहर आए तो उन्होंने सिखिज्म का जो मूल मंत्र है, एक ओंकार, वो यहाँ पर उन्होंने जो है वो दिया था, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is presidential elections in India. So this is the topic for your GS2 polity section. So former Jharkhand governor and NDA candidate Draupadi Murmu ji has been elected as the 15th president of India. She is the first tribal woman to be appointed to the position, and she is also the youngest president as well. So these are certain constitutional provisions which relate with the election of president in India, like the Article 52, 54, 55, etc. And the Parliament of India has also passed the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, which says that the Election Commission of India can issue a notification calling for the election of the president on or after the 16th day before the expiry of the term of office of the outgoing president. Okay, so it also says that the election to the presidential office will be held as per the system of proportional representation. Also, it will be held by secret ballot. So what will be the eligibility criteria? The candidate to the office of president must be above 35 years of age at least, and he or she must not be holding any office of profit. He or she must be qualified for election as a member of Lok Sabha, and he or she must be registered as an elector in India. So the nomination would be accepted only if the candidate's name is subscribed by at least 50 electors as proposers and at least 50 electors as seconders. So the security deposit has also to be submitted. 15,000 rupees should be deposited with the returning officer. And who is the returning officer? Either it's the Secretary General of Lok Sabha or the Secretary General of Rajya Sabha. So they generally get this position by rotation. Like for this year's election, the Secretary General of Rajya Sabha was the returning officer. So the electoral college consists of elected MPs of both houses of the parliament and elected MLAs of the states and Delhi and Puducherry. So just remember that nominated members do not participate in the election of the president. So what is the value of the vote? So value of vote differs from state to state, and it is determined on the basis of population. A formula has been derived based upon the population of each state, so that the value of vote of the members of that legislative assembly can be derived. For the Lok Sabha and Rajya Sabha MPs, the total value of votes of all states and UTs is divided by the total number of MPs, which elected MPs, of course, only the elected MPs, of course, because they are only participating in the election. So, and that's how we derive the value of votes per MP. And the winning candidate must get at least 50% plus one vote to be declared as elected.
So the next topic is hate speech. So this is also important for your GS2 governance topic. So Supreme Court has asked the central government as to how much the states have progressed with respect to the guidelines that Supreme Court issued in 2018 with respect to hate speech and hate crimes. So it has asked the Union Home Ministry to compile a report and submit it within 6 weeks regarding the progress that has been made by the states, state governments, and even the central government with respect to controlling and prevention of hate crimes. So let us see what is this hate speech. So hate speech is any form of expression which advocates, incites, promotes, or justifies hatred, violence, or discrimination against any a single person or even a group of persons. So it also poses a grave danger to the democratic society and even to the protection of human rights and rule of law in India. So it is an extreme form of intolerance which can lead to hate crime. So in the Constitution of India, we have this Article 19, which guarantees us freedom of speech and expression. But there is Clause 2, which can allow the Indian state to impose certain restrictions if they are important for the sovereignty and integrity of India, security of the state, friendly relations with foreign states, public order, decency, or morality. So in these cases, this speech can be banned, okay, or this speech can be controlled. So there are certain legal provisions for the hate speech. Also, we do not currently have a specified law or a specific law that can ban or that can make it unlawful for that can make hate speech unlawful, but we have certain provisions in our several of our legislations which basically punishes the hate speech. Like in our IPC, Section 153A punishes this speech which can promote enmity between different groups, and it is punishable with 3 years of imprisonment. Section 505 of IPC makes it an offense if any statement is aimed to conduce public mischief. Similarly, the Representation of People Act punishes the person who is contesting elections and he or she is disqualified if he is convicted for indulging in acts for illegitimate use of freedom of speech and expression. Similarly, the Protection of Civil Rights Act of 1955, the Section 7 of this act also penalizes any speech which encourages untouchability. Similarly, this Religious Institutions Act of 1988 also punishes any institution where the premises is being used for developing any feelings of enmity, hatred, or promotion of disharmony. So apart from that, there has been certain Supreme Court judgments also, like this Pravasi Bhalai Sangathan versus Union of India case. Supreme Court held that existing laws are enough to solve the problem of hate speech to a great extent. Like we have seen above, that it is there are several laws where they have several provisions. They are enough, of course, to deal with the hate speech. In even Jafar Imam Naqvi versus Election Commission of India case, the petitioners wanted to ban or wanted to challenge the hate speeches given by the candidates, but the Supreme Court said that even Election Commission of India is sufficiently empowered to take action, and there is no need to have a public interest litigation for this purpose. So but suggestions have been made by several committees, like the Law Commission has proposed that separate offences must be added to the IPC to specifically criminalize hate speech. Even the MP based Barua Committee and TK Vishwanathan Committee said that even the promotion of racial discrimination must amount to hate speech, and specific provisions must be added to the IPC. Similarly, the Committee for Reforms in Criminal Laws has also sought comprehensive changes to our criminal law, so that issues having specific provisions to specific provisions to tackle hate speech can be added to our criminal laws. So what was the 2018 case in which the guidelines were issued? So this was Tehseen Poonawalla versus Union of India case of 2018, in which the Supreme Court issued guidelines regarding the
handling of hate speech and hate crimes. So major guidelines include fast tracking of trials related to such hate speech or hate crimes, compensation to victim, punishment should be deterring, disciplinary action must be taken against the law enforcement officials who have shown lax attitude. Nodal officers must be appointed at the national level so that hate crimes can be noted and FIRs can be registered. So now the Union Home Ministry will submit a report, and we'll see how the states have progressed upon this particular guidelines. So the next topic is abortion rights of unwed women. So this topic is important for your GS1 social issues topic. And what has happened recently is that a woman, a 25-year-old woman, had approached Delhi High Court for termination of pregnancy, and her pregnancy was 23 weeks and 5 days old, and she wanted to terminate it because her partner had refused to marry her, and she challenged the Rule 3B of the recently introduced medical termination of pregnancy rules of 2021, saying that this does not have a specific provision for unmarried women. So Delhi HC refused to allow the termination of pregnancy, saying that this MTP rules do not have a specific provision for unmarried women. But then the lady moved to the Supreme Court, and Supreme Court has provided her with a favorable view. So as per Supreme Court, denying an unmarried woman the right to safe abortion would violate her personal autonomy and freedom under Article 21 of the Constitution. So even the Supreme Court has broadened the definition of Rule 3B of the MTP rules. So you know that under MTP Act of 1971, the term husband was used, and in MTP Act of 2021, the term husband was replaced with partner. So this is evident that the MTP Act 2021 has an intention to broaden the definition of married from just married women to unmarried women also. So that's what the Supreme Court has now interpreted from it, and it has said that the intent of this MTP Act is to provide protection to both married and unmarried women as well as single women. Okay, so this is what the Supreme Court has said. So while discussing this topic, we should also see the abortion laws in India. So IPC 1860, of course, criminalized this abortion without any sufficient reason. But the MTP Act of 1971 aimed to liberalize this access to abortion for our women. So for termination of pregnancy up to 12 weeks, the opinion of one doctor was required. For termination of pregnancy between 12 weeks and 20 weeks, two doctors' opinion was required, and it could only be terminated if it involved a risk to the pregnant women's life or a substantial risk to the child. So the 2021 Act has further liberalized the rules. So now the opinion of one doctor is required for termination of pregnancy up to 20 weeks, and for pregnancies between 20 to 24 weeks, opinion of two doctors would be required. And there is Rule 3B, and so which says that for termination of a pregnancy for a period of up to 20 to 22 weeks can only be allowed if they are for the 7 categories of women. Okay, so these are the survivors of sexual assault or rape or incest, minors, change in case the woman has change of her marital status during the ongoing pregnancy, women with physical disabilities, mentally ill women, if there is any fetal malformation during the child during the pregnancy, which may lead to a child getting seriously handicapped, and women who got pregnant during the any disaster or emergency like situations, which of course would be declared by the government. In these 7 categories of cases, the termination of pregnancy up to 24 weeks would be allowed. But it did not specifically use the term unmarried women. But now, after the Supreme Court judgment, the ambit of this act would be widened, and unmarried women will also be covered under this act now. So the next topic is Indian Arctic Bill. So this topic is important for your GS3 Science and Technology section. So Lok Sabha has recently passed this Indian Antarctic Bill 2022. So now India would have its own legislative measure to protect the Antarctic environment. So it has proposed to set up the Indian Antarctic Authority, which will be under the Ministry of Earth and Earth Sciences. It will be the apex decision-making authority and will facilitate programs and activities which will be permitted under this bill. So it aims to provide a
a stable, transparent, and accountable process for Antarctic research and expeditions, which will go from India, of course. And the Secretary of Ministry of Earth Sciences will be the chairperson of this authority. So let us also see the key provisions of this bill. So it says that any person who is going on an Indian expedition shall require a permit, and no person would be allowed to enter Antarctic without a permit or written authorization from of another party to the protocol. It also says that commercial fishing would also be allowed for Indians in Antarctic because the Antarctic Treaty permit allows so. Even the tourism activity would also be allowed now, because earlier even the Indian tourists were going through other countries like Argentina to this Antarctic, but now Indian tour operators would be allowed to operate in the Arctic. It has also enhanced environmental protection for the Antarctic region, because it has prohibited drilling, dredging, excavation, or collection of mineral resources. And a law officer would also be appointed to ensure that no unlawful activity take place in the territories which have been occupied by Indian research stations. So currently we have this Maitri and Bharati research stations in the Antarctic. Even we had this Sagar Nidhi, which was the first Indian vessel to navigate Antarctic waters. So what is this Antarctic Treaty based upon which this bill has been formed? So Antarctic Treaty was signed in Washington in 1959. It entered into force in 1961. Currently, the total number of members are 54. It's a legally binding agreement, and it declares that the area around 60 degrees south latitude is Antarctic. And what are the key provisions of this treaty? So it says that any scientific observation or results derived from Antarctica shall be exchanged and made freely available to everyone. The earlier countries like this, Argentina, Australia, Chile, France, etc., they were having certain territorial claims, but the treaty does not recognize any of such claims, and it says that all areas of Antarctic, including all stations, installations, etc., shall be open at all times for inspection. So there was also Madrid Protocol, which was added in 1983, and it declares Antarctica as a natural reserve which is devoted to peace and science, and it outlines the environmental principles which will act as the fundamental consideration for the conduct of all activities in the Antarctic. It has prohibited mining indefinitely. It also established this committee for environmental protection to advise and formulate recommendations to the Antarctic Treaty parties for the implementation of this Madrid Protocol. It will also require the development of contingency plans in case of any environmental emergencies in Antarctic. So the next topic is Kali Bain. So it is important for your art and culture section. So the Punjab Chief Minister has been admitted to Delhi's Apollo Hospital after he drank a glass of water directly from Kali Bain, which is a holy rivulet in Sultanpur Lodi area. And it's a 165-kilometer rivulet which starts from Hoshiarpur, and it meets the Beas and Satluj rivers in Kapurthala. And why the CM had to be admitted to the hospital? Because the wastewater in this rivulet has been increasing from the last 20 or 22 years. There were several programs which aim to clean this rivulet, but of course it has not shown any considerable progress. And what is the religious significance of this Kali Bain? So Kali Bain is basically the important for Sikh religion and history, because the first Guru Nanak Dev Ji is said to have got enlightenment here. While he was staying at Sultanpur Lodi with his sister Bebe Nanki, he used to go to bathe in Kali Bain, and one day he disappeared, and only to emerge on the third day. And the first thing that he recited during when he emerged from this Kali Bain was the Mool Mantra of Sikh religion, that is the Ik Onkar. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.